હક્કી આવાજ ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। ડભોઈ શહેરમાં રમત ઉત્સવ યોજાયો હતો। દયારામ કેળવણી મંડળ સંચાલિત ડભોઈ શહેરની જાણીતી અને શ્રેષ્ઠ સંસ્થા જે બાળકોના હિતમાં સતત રહીને કામ કરતી શ્રી M.H. દયારામ શારદા મંદિર ડભોઈમાં રમોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શાળાના શિક્ષક શ્રીઓએ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરી ક્રિકેટ, એસ્કેરમ, संगीत, खुर्सी, लींबू चमची, 100 मीटर दौड़, लोट कूकनियों, स्लो साइकिलिंग जेवी जुदी जुदी रमतों 122 जेटला विद्यार्थीओए भाग लीधो हतो। शाळाना आचार्य श्री सुनीलभाई राठवा, एडमिनिस्ट्रेटर योगेशभाई पटेल तेमज सुपरवाइजर A.C. चावड़ा, A.L.C. चौधरी साहेब श्री ए दरेक शिक्षक श्रीने कामगीरी आपी हती ते तमाम कामगीरीमां उत्साहपूर्वक काम करी रमोत्सवने सफल बनाव्यो होवानुं जाणवा मळ्युं हतुं। रिपोर्ट रफीक मंसूरी। जी શું કાર્યક્રમ હતો આજે? અને શ્રી દયારામ કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી M.H. દયારામ શારદા મંદિર માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં તારીખ 30/12/2025 થી 1/1/2026 સુધી 3 દિવસ શાળાનો વાર્ષિક રમોત્સવ શાળામાં રાખવામાં આવેલ હતો। તેમાં લગભગ ક્રિકેટમાં 16 ટીમોએ ભાગ લીધેલો હતો। ધોરણ 9 થી 12ના अन्य रमत में चेस, कैरम, संगीत खुर्सी, लींबू चमची, स्लो साइकिलिंग, लोट फूकणियों, 100 मीटर दौड़ अने अन्य रमत शाळा में विविध स्पर्धकों द्वारा राखवामां आवेली हती। आज रोज तारीख 1/1/2026 9 वर्षना गुरुवारना रोज मंडलना प्रमुख श्री दीपकभाई भोईवालाना वरद हस्ते विजेता टीम ने माध्यमिक विभाग में 10D और उच्चतर माध्यमिक विभाग में 11C टीम ने विजेता ट्रॉफी आपवामां आवी, मेडल आपवामां आव्यो अने प्रमाणपत्रों पण आपवामां आव्या तथा रनऑफ टीम ने पण ट्रॉफी आपवामां आवी अने बंने टीम 9A और 12C बंने टीम ने रनऑफ टीम ने पण ट्रॉफी आपवामां आवी। तदुपरांत शाळामां जे विविध रमतो योजवामां आवी तमाम विद्यार्थीओने मेडल, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल आपी एनायत करवामां आव्या। तमाम विद्यार्थीओए उत्साहपूर्वक भाग लीधो। एकंदरे आ वार्षिक रमोत्सव दयाराम केळवणी मंडल में जो योजवामां आव्यो तेमां तमाम विद्यार्थीओए उत्साहपूर्वक भाग लई अने संपूर्ण रीते सफल बनाव्यो।